ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। Today, after the Independence Day, let us remember one of the great philosophies of Mahatma Gandhi. He quotes, "In the democracy that I envisaged, a democracy established by non-violence, there will be equal freedom for all. Everybody will be his own master." Namaste. I, Sohani, the host for the day, with Prisha, my co-host, welcome you all to this morning assembly. Today is 16th of August 2021, Monday, અને આજે શ્રાવણ વદ આઠમ છે. Before we ponder on Gandhiji's thoughts in this assembly, let us get ready for the morning prayers with grateful hearts. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं।
सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर गेत सजे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी धोक निराली दक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे। वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। Namaste. I believe to experience freedom.
one should have the knowledge of freedom as well as the bondages. What are we getting freed from? What is freedom all about? I invite Anya to recite a poem in English titled Freedom by Rabindranath Tagore. Namaste. My name is Anya Bhadre. I am studying in class 6C. Rabindranath Tagore was a versatile genius, a true nationalist. He has been inspiring generations of intellectual minds, irrespective of their religion, race, language, and also barriers such as state and nation. The literature of Tagore, spent over 6 decades, is a reflection of a sensitive artist, a sympathetic man of letters, and a profound thinker. Today, I am going to recite the poem Freedom by Rabindranath Tagore. Freedom. Freedom from fear is the freedom I claim for you, my motherland. Freedom from the burden of the ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of future. Freedom from the shackles of slumber wherewith you fasten yourself in night's stillness, mistrusting the star that speaks of truth's adventurous path. Freedom from the anarchy of destiny, whose sails are weakly yielded to the blind, uncertain wind, and the hymn to a hand ever rigid and cold as death. Freedom from the insult of dwelling in a puppet's world, where movements are started through brainless wires, repeated through mindless habits. Where figures wait with patience and obedience for the master of the show to be stirred into a mimicry of life. Freedom from fear is freedom I claim for you, my motherland. Thank you. कहने को तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम दर्शाते भी ऐसा ही है जैसे हम स्वतंत्र विचारों वाले, खुली सोच वाले, खुले दिल वाले इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन जब हकीकत पर हम गौर करें तो नज़ारा कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जी हाँ, सुनने में कटु लगता है, लेकिन यही सत्य है। इन्हीं तथ्यों पर आधारित मनोज मुंतशिर जी की एक बहुत ही बेहतरीन रचना आज़ादी लेकर आ रही है मेरी दोस्त हिमानिया और तनिष्का। नमस्ते। करेंसी पे बापू की फोटो, करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोटों पे छपने के लिए बापू ने सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा जहाँ भी आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। कब तक
इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे। अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 20 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो। बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। धन्यवाद। અહિંસાનું શસ્ત્ર. ગાંધીજી સચ્ચાઈ અને અહિંસામાં માનતા હતા. જૈન ધર્મના મંત્ર અહિંસા પરમો ધર્મને અનુસરીને ગાંધીજીએ કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર ભારત દેશને આઝાદી અપાવી છે. તો ચાલો સાંભળીએ 6A ની ધૃતિ અને મિશ્રી પાસેથી. નમસ્તે, મારું નામ ધૃતિ દાસ છે અને હું ધોરણ 6A માં ભણું છું. મને ડાન્સ કરવું, ડ્રોઈંગ કરવું, નવી નવી જગ્યાઓ ફરવી બહુ ગમે છે. હા, પણ મને દંભી લોકો થોડા ઓછા ગમે, કેમ કે એ લોકોના દેખાડવાના દાંત અલગ હોય છે અને ચાવવાના દાંત અલગ હોય છે. મારી કવિતાનું શીર્ષક છે અહિંસાનું શસ્ત્ર. કર્યો સંકલ્પ ગાંધીએ આઝાદી જંગ ખેલવા, શસ્ત્રો હિંસકને તીક્ષ્ણ, સઘળા દોર મેલવા. પાશવી બળની સામે પાશવી બળ ના ટકે, લડવું આત્મશક્તિથી, શ્રદ્ધા હિંમતથી હકે. સત્ય છે આપણી પક્ષે, અહિંસાને વધારવી. સત્યાગ્રહ થકી તંત્રા, દેશની ઘોર ટાળવી. સત્યાગ્રહ અહિંસાના નવાબે આયુધો ધર્યા. એમણે દેશ સામેને ઉમંગે સૌને ભર્યા. પરંપરાગત નેતા લાગ્યા શસ્ત્રોનો કરવા ઉપહાસ. યુદ્ધ વિના એકે પ્રજાને આઝાદીનો મળ્યો પ્રકાશ. કહ્યું એમણે, નિર્બળને ના મળી શકે મુક્તિનો લાભ. વામન કેમ ગ્રહે તારાને, અપંગાલેંગે છે આપ. ગાંધી બોલ્યા, સત્ય અહિંસા નિર્બળ કેરો માર્ગ નથી. હથિયાર વિના લડવું એક લેબેવાનું કામ નથી. આત્મશક્તિની આગળ શક્તિ શસ્ત્રોની સઘળી નમશે. હરીફના હૈયામાં અંતે માનવતા નક્કી રમશે. એ જ મંત્ર છે સ્વતંત્રતાનો, એ પંથે જ પ્રયાણ કરો. માતૃભૂમિની કાજ સ્નેહથી સર્વસ્વતણો અર્ધ્ય ધરો. અસહકારને અજમાવીને સવિનય કાનૂન ભંગ કરી તમન્ના કરો પેદા. દેશી સ્વાતંત્ર્યતાની હવા ભરી. टूटी पड़ से पाया सगड़ा परदेसी शासन घेरा. भानु प्रगटता अमर रहती अंधकारनी ना सेना. स्वातंत्र तणो मंत्र अनोखो पामे पीड़ित शो संसार. शोषण शमे टड़े दानवता थाय शस्त्र बड़ केरी हार. लड़વું બ્રિટિશ સત્તા સામે, બ્રિટિશરોનો દ્વેષ નહીં. ઘૃણાભાવ અંતરમાં લડતા પ્રગટ થાય લવલેશ નહીં. નવી વાત સુણીને એ દેશમાં લહેરી નવી. નવ જાગૃતિની ચાલી ઉત્સાહે સર્વને ભરી. સ્ત્રીઓએ દેશને કાજે જંગમાં ઉતરી પડી. શસ્ત્રો સામે હસી ધેરીએ પ્રેમ શ્રદ્ધા થકી લડી. સહકાર થકી સૌના પછી તો દેશમાં ઘણા થયા આંદોલનો. કષ્ટો વ્યથાની ના રહી મણા. દર્શાવી લાગણી દેશે કેટલાય પ્રસંગથી. સરકાર ઉઠી હાલી જનતાના ઉમંગથી. સત્યાગ્રહ ને અહિંસા તણા અભિનવ શસ્ત્રો સફળ થયા. પરદેશી સત્તાના ભયના બની આવરણ દૂર ગયા. જુસ્સો જનતા કેરો કેવો, જુસ્સો જનતા કેરો કેવો સમસ્ત દેશે પ્રગટ થયો. પ્રેરણા લભીને ગાંધીની ભવ્ય રચી ઇતિહાસ રહ્યો. ભવ્ય રચી ઇતિહાસ રહ્યો. આભાર. આપણા દેશ ભારતમાં અનેક ધર્મના લોકો વસે છે. તેમની ભાષા, રીતિ રિવાજ, ખોરાક વગેરે અલગ છે, પરંતુ વિવિધતામાં એકતા રહેલી છે.
તો ચાલો સાંભળીએ 6B ના વિદ્યાર્થી રિયા પાસેથી. ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मळीने वंदन स्वीकार जो हमारा. ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मळीने वंदन स्वीकार जो हमारा. हिंदू आणि मुसलमान विश्वासी पारसी जी देवी समान रीते संतान सौ तमारा. पोषो तमे सहुने शुभ खान पान बख्शी सेवा करे बने ते संतान सौ तमारा. रोगी आणि निरोगी निर्धन आणि तवंगर ज्ञानी आणि निरक्षर संतान सौ तमारा. वाल्मीकि व्यास नानक मीरा कबीर तुलसी अकबर शिवाजी माता संतान सौ तमारा. सौनी समान माता सौए समान तेथी ना उच्च नीच कोई संतान सौ तमारा. चाहो बधा परस्पर साहो बधा परस्पर ए प्रार्थना करे आ संतान सौ तमारा. ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मणिने वंदन स्वीकार जो हमारा. करिए मणिने वंदन स्वीकार जो हमारा. करिए मणिने वंदन स्वीकार जो हमारा. Expression is also a form of freedom. We are privileged to receive ample of expression in today's assembly. Let us express our gratitude for our motherland India. Please stand up for the national anthem. Assembly Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly Vishram. So now I invite Mr. Sankalp Vansara for today's Point to Socho. Hello, good morning everyone. Freedom is today's point to Socho. Why freedom? Because we all celebrated our 75th Independence Day yesterday. You all know India gained freedom from British rule on 15th August 1947. Freedom to lead our country in the direction that we want. Freedom to live wherever we want in our country. Freedom to follow our religion, freedom of speech, freedom of expression of our thoughts. But with this freedom came certain responsibilities. Responsibility to bring such a diverse nation with such a diverse population and culture under one roof. This responsibility was very well fulfilled by Sardar Vallabhbhai Patel. Responsibility to protect the boundaries of this great nation from enemies. This is being done by our armed forces, Army, Navy and Air Force since so many years.
responsibility to give equal rights to all citizens. This is done by our Constitution. So, friends, remember in life, freedom is there, but it always comes with some responsibility. In the future, you will get freedom to drive a bike or a car of your choice. But with that freedom will come the responsibility not to hurt yourself, not to hurt others, and follow the traffic rules properly. In the future, you will get freedom to take higher education of your choice, to select a profession of your choice. But with that freedom comes the responsibility of pursuing the path with honesty and integrity while you achieve your success. In the future, you will get freedom to select your friends, but with that comes your responsibility to select the right person, a person who helps you in your path, a person who gives you correct guidance. Don't make a friend who misleads you or guides you towards the wrong path. So, friends, in life, enjoy your freedom, but always also follow and fulfill your responsibilities. Stay blessed. Have a great day. Thank you. Thank you for being with us. Have a nice day. जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। करेंगे, हम अर्चना करेंगे।